Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our comparative anatomy of vertebrate paper. In our previous lecture, we had discussed about the structure and function of integument. So integument क्या होता है ये मैंने आपको already बता दिया था that it is nothing but the skin of any animal. Here in this video lecture we are going to discuss about the derivatives of integument. Derivative मतलब क्या होता है? You might have that question in your mind that what is derivative. So derivative मतलब कोई चीज़ जो किसी चीज़ से बनी हो या it is oriented from something or it is made up of something. So the perfect term will be it's made up of something or it's arising from something. So in this case it is arising from something. So ऐसे स्ट्रक्चर जो जिनका बेस स्किन से बना होता है या जो स्किन के लेयर्स से बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम डेरिवेटिव्स बोलेंगे. सो देर आर न्यूमरस डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन और इंटीग्यूमेंट. तो बेसिकली अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो पार्ट में दो टाइप में डिवाइड होंगे. दैट इज़ हार्ड एंड हॉर्नी स्ट्रक्चर्स विल बी देयर एंड ग्लैंड्स विल बी देयर. सो लेट अस जस्ट डिस्कस देम इन डिटेल. The hard and horny structure, which is just a derivative of skin, is either could be epidermal or dermal. So ये ऐसे पार्ट होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो टफ़ होते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं आउटर स्किन में, या जो हॉर्न लाइक यानी स्पाइन लाइक या स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. सो यू माइट बी just thinking or wondering that which are these derivatives. So let us first discuss about epidermal derivatives and then we will discuss about the dermal derivatives. So first epidermal derivative is scales, then beaks, horns, then claws, and then nails and hooves and feathers and hairs etc. are the epidermal. So these 8 are the epidermal derivatives. कौन कौन से है? स्केल्स है, बीक है, हॉर्न्स है, क्लॉज है, नेल्स है, हूफ्स है एंड फेदर्स एंड hairs है. Now let us go to the next slide which is having the structure of these. So let us just watch out these epidermal derivatives, what they look like. So these are the scales. Scales are present either on रेप्टिलियन बॉडी. तो रेप्टिलियन बॉडी के जो स्केल्स होते हैं वो इपिडर्मल स्केल्स होते हैं या इपिडर्मल डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं हम उनको. जो चमेलियन होता है या जो लिजार्ड्स होते हैं उनकी बॉडी पे जो स्केल्स होंगे दैट आर एपिडर्मल इन ओरिजिन. सो दीज स्केल्स आर एपिडर्मल इन ओरिजिन, नॉट fish scales. Okay, fish scales are not. Reptilian scales are epidermal in origin. Okay, now the second type is, or second thing is beak. So all the different type of beaks of all the birds are epidermal in origin. So they are made up of skin, or they are the skin derivatives. They are hard and which is used for the breakdown of their food or for chewing purpose of their food. Second or third derivative is horn. हॉर्न आपको पता है सींग जो होते हैं. सो ऑल टाइप ऑफ हॉर्न्स आर, whether they are cow horns, whether they are kudu horns, or whether they are horns of giraffe, whether they are horns of deer, or whether they are horns of sheep. All the horns are epidermal in origin, which means that they are derived from the epidermal part of the skin. uh, Sorry. Okay. Next type is क्लॉज. क्लॉज जो है दैट हम इनको बोल सकते हैं कि दिस आर द पार्ट ऑफ द, or we can say that these are the type of nails. So these claws are the part of bird legs, or they are part of lizard legs. So these claws are
present there. We had already discussed when we were discussing general characters, तो तब मैंने बताया था कि जो claws digitated claws होते हैं, so these claws are hard structure, जो nail like structure होते हैं, but ये birds और reptiles में, lizards में present होते हैं. Okay, next type is nails. Nails हमारे होते हैं, हमको पता है. तो nails are just keratinized structure, जो मैंने आपको बोला था. केराटिन जो है वो कहाँ पे होता है, वो epidermis में होता है. तो these are the keratinized structure. और भी इसके पहले जो बताया था मैंने claws, वो भी keratinized structure होता है. So these are the hard structure which are meant for the protection of our fingers. नेक्स्ट इज़ होफ्स. होफ्स मतलब ये जो बेसिक बेस पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है किसी भी काऊ का या हॉर्स का. सो दीज आर द होफ्स. दीज आर मीन्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज ऑफ देयर फोर एंड हाइंड लिम्स. क्योंकि हमको पता है दे आर टेट्रापोड्स, फोर लेग्स पे चलते हैं. सो दे आर meant for the purpose of protection only. Next type is feathers. So you can see the colorful feathers here. So all type of feathers are epidermal in origin, or they are epidermal derivatives of birds. So they arise from the epidermis portion of the skin. Next part or next type is hairs. Last thing is the last but not least, hairs. Hairs are the part which are seen in only mammals. सो हेरी बॉडी इज़ ऑफ मैमल्स. सो चिम्प्स में या फिर याक्स में, जो भी मैमेलियन एनिमल्स होंगे उनमें जो है वो हेयर्स हमको दिखाई देते हैं. इवन वी ह्यूमन्स ऑल्सो बिलोंग टू द मैमल कैटेगरी, दैट्स वाई वी ऑल्सो हैव hairs on our body. So here the epidermal derivatives ends up. Now let us discuss about the dermal derivatives. So first dermal derivative is fish scale. So all three type of fish scales, cycloid, ptenoid and placoid type of scales are included, or they are called as dermal derivatives. Another type is scute. Scute क्या होता है? Scute are the part or they are scale like structure. Scale like ही होते हैं, but these are the part of certain a bit of lizards which are just reptilian animals में होते हैं. So ये scale जैसे दिखाई देते. Scales कैसे होते? Scales are just they are kind of, I'll explain you. So they are kind of like this. They are kept one over one another. ऐसे होंगे वो. So if it is the scale, so it will have this like structure. But the scutes are, you can see, they are arranged a bit at a distance from one another. They are just having a this like this structure. They are not placed at one another. They are not starting or they are not just kept over, और दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर. वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहे, बस एक दूसरे के साइड बाय साइड. सो दिस इज दिस a part of skin which is called as scute. This is also meant for the protection, extra body water का loss होने से रोकने के लिए. So here all the derivatives hard and horny structures ends up. So in our next lecture we will talk about the another integumentary derivatives that are glands. So there are that we will discuss in our next lecture. Till then, thanks for watching. Have a nice day.